सो हेलो गाइस एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आपने शायद कभी ना कभी गीता जीपीटी यूज करे हो। तो गीता जीपीटी इज लाइक अ जीपीटी वेयर यू कैन आस्क योर प्रॉब्लम एंड द जीपीटी गिव यू अ सॉल्यूशन लाइक गीता और लाइक श्री कृष्णा। ओके, मगर आज हम जो ऐप बनाने वाला है वो गीता जीपीटी नहीं है, वो है डोरेमन जीपीटी। Suppose when we asked a problem in our app, then the Doraemon gives our solution. Okay, so I think this app is very interesting और very मजा आएगा करने में। Okay, so yeah, that's it. और हाँ, डोरेमोन जीपीटी बनाना बहुत ही आसान काम है। ये सिर्फ 3 और 4 मिनट में बन जाता है। ओके, मगर क्योंकि मैंने फ्रंट एंड और बैक एंड एक साथ कोड किया है तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, वरना असली काम तो 3-4 मिनट में ही काम ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स डू इट। हेलो गाइस, सो आप बात करते हैं कि यूआई के बारे में। तो ये है हमारा फर्स्ट होम यूआई। ओके, एंड ये है हमारा सेकंड, दिस इज द इनपुट स्क्रीन एंड दिस इज द थर्ड आउटपुट स्क्रीन। ओके, सो दैट्स इट। तो आप बात करते हैं कि क्या क्या टूल्स लगेगी और क्या क्या टिक लगेगी। तो यहाँ पर हम जैसे कि जेटपैक कंपोज फ्रेमवर्क यूज करें, तो फॉर दैट आई यूज एंड्रॉइड स्टूडियो एंड नंबर 2 इज जेमिनी, क्योंकि जेमिनी से हम जीपीटी वाला काम करेंगे। तो चलिए आप कोड करते हैं, कोड और डिकोड, लेट्स ट्राई इट। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने जो रिसोर्स चाहिए था वो मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया है। ओके, देन मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करता हूँ। ओके, देन ओपन करने के बाद मैंने एक 3 डॉट पर क्लिक करता हूँ, देन फाइल, देन न्यू प्रोजेक्ट। ओके, तो मेरा ऐप का जो नाम है वो नाम है डोरे जीपीटी। सो जस्ट डोरेमॉन जीपीटी, आई एंटर द नेम, देन आई फिनिश। ओके, okay, so it takes some time. Okay, so finally our app build is successful, here you can see. तो आपका जो ये मिनिमाइज करेगा, देन यहाँ पर ऐप फोल्डर में जाकर और देन कॉर्डिन प्लस जावा में जाकर देन यहाँ पर राइट क्लिक करना, देन राइट क्लिक करने के बाद न्यू पर जाकर यहाँ पर पैकेज पर क्लिक करना, देन एक पैकेज क्रिएट करना। सो सपोज माय पैकेज नेम इज स्क्रीन। ओके, तो आई राइट हेयर स्क्रीन, देन यहाँ पर दो, सो ओके, नाउ यहाँ पर 3 स्क्रीन होगा। सो फर्स्ट इज द होम स्क्रीन, so I write here home screen. This is not home, this is the start screen. Okay, so start screen. Then I write here the next screen, that is the input screen. Then the output screen, so output screen. Okay, तो आप यहाँ पर COMP जस्ट टाइप करना एंड देन एंटर करने के बाद देन यहाँ पर आप लिखना स्टार्ट स्क्रीन। ओके, and also had added that preview. So before preview, I import the 4 resource. So for that, I can simply copy these 4 resource, ctrl plus C, then यहाँ पर रेस, then drawable के अंदर आप राइट क्लिक, ओके, then ctrl plus V, ओके, then ओके। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर रिसोर्स ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुका है। देन स्टार्ट स्क्रीन पर जाकर यहाँ पर देन आपको लिखना है प्रीव्यू सोर्स सिस्टम ट्रू। सो नाउ यहाँ पर आप जस्ट क्लिक करना फॉर शोइंग द प्रीव्यू स्क्रीन। ओके, बिल्ड हो रहा है। यहाँ पर एक एरर आया है, वो है 35 करना पड़ेगा। ओके, सो फॉर दैट यू सिंपली ओपन योर Gradle files, then inside the Gradle files here the module app, then here you write 35, then sync now. Okay, that's it. तो अब मेरे को सिंपली ए स्क्रीन बनाना पड़ेगा। ओके, तो फॉर दैट यहाँ पर आप देख सकते हो ये सिर्फ
ओके। तो फॉर द पर आप देख सकते हो कि इस स्क्रीन में कुछ भी नहीं है उधर ज़्यादा, सिर्फ एक आइकॉन है और सॉरी सिर्फ एक इमेज है। ओके, दैट्स इट। तो फॉर दैट आई सिंपली go to the start screen again, then here again build and refresh, then click the build button. So let's solve the dependency error. Okay, so here first see the dependency Android Core 1.160 requires Android Grellwagen 8.6.0. ओके, तो आप सिंपली आपका जो लिप्स फाइल है वहाँ पर जाकर यहाँ पर जो कोर के टेक्स्ट फाइल का यहाँ पर आप 1.15 कर देना। ओके, देन सिंग नाउ। ओके, देन again build and refresh। तो नाउ देन आप टाइप करना दैट इज द बॉक्स, बॉक्स के अंदर सॉरी बॉक्स देन मॉडिफायर डॉट fill max size। ओके, देन content alignment center, then for import the image here we use import method, so import image center resource r, so here first we import the correct dependency of r, so remember that here I import com sujoy Doraemon GPT dependency, so simply click this, then dot, then drawable, then here I write the start screen। Okay, that's it, then start screen, and okay, so and here you see the image is loaded in our screen, but the problem is that here you can see the bottom part of this screen is now some blank space। Okay, so now it's time to solve this problem, so for that here we write that modifier 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 dot fill max size, then comma, then scale, content scale, then fill। Okay, so content scale dot uh, crop or fit width, so first fit। Okay, fit not fill bounds, yeah, that's it, fill bounds। Okay, now here you can see that our problem is now solved, so next part what we do, that is here I add a floating button for going to the next screen, so for that here we write floating action button। Okay, then I write here modifier equal to modifier dot align bottom center। Okay, sorry, this is right inside this, so comma, then write this। Okay, so this is not a bottom center, so I so I want this floating action button right here। Okay, so I write that bottom end। Okay, bottom end, so now you see that okay so now you see that the button comes to the end of my screen, so now so now it's time to give some padding, so for that dot padding 16 dp, yeah, 16 dp, first we import this, so simply alt insert, then alt enter। Okay, so now here you can see here our 16.dp padding is now available, yeah, that's it, but I suppose I
12.db. Yeah, that's right. Then it's time to color. So I write that content color white. Okay, okay, white. Okay, yeah, that's right. Now inside this button, what I need to show. तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं एक एरो साइन शो करूँ. तो फॉर दैट आई राइट हियर icon image vector. Then inside the image vector, here I write icons, icons dot default dot arrow. Okay, so arrow forward. Okay, and here I write arrow. Okay, okay, so that's it. So now I want to change the color of the arrow. So for that, tint tint color I want here. Don't worry, I want this color. Yeah, yeah. Okay, now I want to change to the size of this icon. So for that, I write modifier, not size. Okay, modifier dot size. Then size, suppose I want that is the 10, not 10, 20.dp. Not 20, this is 40. Yeah, now it looks good. Okay, so our start screen UI design is cover. सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक इमेज है बैकग्राउंड पर. ओके, सो एंड यहाँ पर एक टेक्स्ट है अपर ऑफ द स्क्रीन. एंड यहाँ पर एक बॉक्स है और एक कार्ड है और यहाँ पर एक सेंड करने का एक इमेज है. दैट्स इट. तो देन ओके, सो आई नाउ simply copy this. Okay, simply copy this and paste here. Okay, paste here. Simply change here name, that is the input screen. Okay, that's it. Okay, so first here the image is changed. So and here not any floating action button. So I just cut this. Then input, and this is the input screen. Input. Okay. Then column. Okay, and inside this column, that is the modifier dot fill max size and horizontal alignment. Okay, so now I want a text. So for that, text dot padding 15.dp. Okay, now text. So write your problem. Okay, so write your problem. Okay, then color is the yellow color. Then the font size is 30.sp, import sp. Then font family is serif. Okay, here I use, this is not ear, this is the ear. And here I also add backslash n for a new line. Okay, here you can see that the new line. Okay, so then font weight is bold. Okay,
Then modifier is modifier dot pairing, that is suppose from the vertical I need 10 point dp. Okay, so that looks good. Here suppose 33 point sp. Okay, that looks pretty good. Now I want a card. Okay, so for that, so card first okay, so first I declare the height and the width of the box. So modifier dot height, that is probably the 100 point dp, and the width, that is probably the, okay, and dot fill max width. Okay, for visible the card in the bottom center, we need to write here a box. So box modifier dot fill max size, then here, the content alignment is the bottom center. Okay, yeah, yeah. So now suppose dot padding is from bottom is the 10 point dp. I think it looks pretty good. Here I want to change the color of the card. So for that, colors, card defaults, dot card colors, that is the color, and inside the color, here we first white. Okay, white, then yeah, I think this is looks pretty good. Okay, then I need some elevation. So elevation, then card defaults 10 point dp. Okay, now I need a border. Here you can see the border is available. So for that, here I write the border, then border stroke with 1 point dp. Color, okay, so then color is this. Okay, okay, but here you can see the height of the card is some bigger. So for that, here I write the height is 200 point dp. Yeah, that's it. Then we come to the box. So inside the card, here I add a text. Okay, okay, but before updating the text, here you can see here the image shown is the 35% of the card. Inside the card, I simply write here the text, that is the text. So text, and text is, suppose this is the text. Okay, and this is the color is always black. Then font size, that is 17 point sp. Then modifier dot pairing, that is 10 point dp. Yeah, now we come, okay, so now we come to the floating accent button, that I can simply copy from this. Okay, then this, then I go to the bottom end. Okay, so for that I simply copy this and paste here. Okay, and cut this modifier. Okay,
So this is bottom center center start, sorry, this is center top, or top center, top top center, yeah, top center. Okay, that's it. Okay, okay, so I simply cut this, then image, painter resource, r dot drawable dot png, then icon. Okay, so now I have to change the size. So for that, I write the size to dot size is suppose 15 point dp, not suppose 100 point dp, not this is 1880 point dp. Yeah, it looks good. Then field max size, then content scale, crop. Okay, then here I can write that the safe. So safe, that is the circle safe. Okay, so circle safe. Yeah, now I brought onto that bottom center. Okay, so that's it. Now, okay, okay, so now here you see the input screen is prepared. Now it's time to write the output screen. So I simply copy the code and paste here the output screen. Output screen. Okay, so first here I change the background. So I write here output, then output screen. Then I cut this text. Now I add a padding, that is the dot padding 20 point dp. Yeah, not 20, suppose this is the uh, okay. Now I want to show the screen to the center. So for that, content alignment center. Okay, and this is dot fill max height, 0.6f. Okay, 0.65f. Now here I want add a button, so I simply add a button, and I want to change the color of the button. Each suppose here the size is 80 point dp, but I want fill max width. Yeah, fill max width, and the color. The color is defaults button default button color. Then inside here I write the color is this. Okay, so now I want to change the shape, that is the rounded corner shape, size is 10 point dp. Okay,
I add a text, that is the text continue. Continue not. Go to input screen. Go to input screen. Okay. Then this is 24 point sp. This is font weight bold. Font family sans serif. Sans sans serif. ओके सो ये था आज का वीडियो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।